अस्सलामुअलैकुम मेरे होम मील वीवर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान शरीफ की बरकतें जारी हो सारी हैं। आज हमारी लिटिल शेफ़ दोबारा किचन में आई हैं और आज कुछ आप लोगों को बनाना सिखाएंगी। तो चलिए हम उनसे सीखते हैं कि वो आज क्या चीज़ बनाना सिखा रही हैं। Assalamualaikum everyone, this is your little chef and today I'm going to present you the recipe of Milk Roohafza. So the ingredients are we're gonna take 3 glasses of milk, half glass of water, 5 tablespoons of sugar, 3 pinch of basil seed, and the main ingredient, Roohafza. So we're gonna take 5 tablespoons of sugar and we're gonna dissolve it into the water. Well, if we take the sugar and put it in the milk directly, it is not going to dissolve. So that's the tip for you for today. And we're gonna mix this until the sugar disappears. As you can see, the sugar is dissolved in the water, and now we're gonna mix the water into the full cream milk. Now we're gonna add the Roohafza as per taste. Now we're gonna add our basil seeds in it. Now we have to mix them well. So these are crushed pistachios and almonds, and now we're gonna add these into our Milk Roohafza. Gonna serve this into a jar, and now our Milk Roohafza have completed, and hope you enjoy it. चलें जी मेरे होम मील फ्रेंड, लिटिल शेफ़ की एक क्विक सी रेसिपी हमने आज आपको सिखा दी है। बच्चे भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। इस तरह से बच्चों की पार्टिसिपेशन भी हो जाती है इफ्तार में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।